So we had started our session of thorax with हनुमान. हनुमान सबने फोटो देखा ना, इंडिया में जो भी रहता है सबने देखा है ना फोटो, ऐसा हनुमान छाती फाड़ के बैठा. Why I am talking about that again? Because there is space between the two lungs, and that space is called mediastinum. Mediastinum. So Ram, Lakshman, Sita, Hanuman are situated in mediastinum of Hanuman. Okay, where are they located? वो हार्ट बोल रहा था, they are in my heart. नहीं, हार्ट थोड़ा सा इधर रहता है, but of course mediastinum lies in the heart. Now looking at a section, a sagittal section, this is the sternum, this is the manubrium, this is the vertebral column. I'm just marking a few important vertebrae, T1, T4 and T12. Now what I have drawn here is a sagittal section, mid-sagittal section, going through the midline of the body. युधिष्ठिर सब गायब ही है क्या? बोलो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे क्या? Now here at the level of T4, T4 is the angle of Louis. Angle of Louis जिसको बोलते हैं हमारे बॉडी में, दिस इज द सुप्रास्टर्नल नॉच जो हमारे सब के बॉडी में फील होता है. थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो एंगल ऑफ लुई फील होता है. दिस एंगल ऑफ लुई इज एट द लेवल ऑफ T4, एट द लेवल ऑफ T4, लोअर बॉर्डर ऑफ T4. So above this, the space is called as superior mediastinum, and below this, the space is called as inferior mediastinum. Superior mediastinum and inferior mediastinum. In between here is the pericardium. Lower is inferior mediastinum. In between is here is the pericardium. This pericardium and its content along with the trachea which is there behind it is called as middle mediastinum. So inferior mediastinum is divided by the pericardium into three parts: anterior mediastinum, middle mediastinum and posterior mediastinum. Okay? Okay, and this is superior mediastinum. So this diagram was just showing the classification of mediastinum. Now again I am drawing the same diagram, and पैंट आपका आ जाएगा तो जैकेट लेके आओ. हाँ, now again I am drawing the same diagram. Here is the pericardium. So let us start with the contents of middle mediastinum first. Boundaries तो ठीक है यार, इसके बाद superior mediastinum, the boundary will be manubrium anteriorly, T1 to T4 posteriorly, superiorly is the subthoracic inlet, inferiorly is imaginary plane. ऐसे यहाँ से चालू होता है ascending aorta. So I am just
noting down the contents of middle mediastinum over here. Middle mediastinum. Firstly लिखा ascending aorta. Then pulmonary trunk. The pulmonary trunk we draw like this with the blue thing because it is carrying deoxygenate, and two pulmonary arteries. Pulmonary trunk and two pulmonary arteries. The right and the left pulmonary artery. ये उसका content. Most important, heart. Most important, heart. Heart से वो पहला आना चाहिए, heart, sorry. Heart. Okay? Then there is the terminal part of SVC, superior vena cava. Terminal part of superior vena cava. Superior vena cava, मृणाल कुठे? हाँ? चार दिन. Superior vena cava is formed by the union of two brachiocephalic veins. Understand these three lines. It is formed behind the first costal cartilage, pierces pericardium behind the second costal cartilage, and enters the right atrium behind the third costal cartilage. Superior vena cava. Superior vena cava is formed behind the first costal cartilage. Dhruti, घरी जा, तुला सांगतो. प्लॅन नाही ना? Formed behind the first costal cartilage, pierces the pericardium behind the second costal cartilage and enters the heart. So अगर that means उसका terminal part हमको enters the right atrium behind the third, because this is second costal cartilage. Angle of Louis is second costal cartilage. That means superior vena cava is piercing the pericardium at that level, not entering the right atrium. It will happen below. बरोबर? यहाँ पे ना जो ट्रकिया है ना, ट्रकिया आके ऐसे डिवाइड होता है T4 के लेवल पे. That trachea and the two principal bronchi are considered as part of middle mediastinum. वो चिपके रहते हैं, तो वहाँ पे स्प्लिट होते हैं. अब trachea divides at T4, फिर वो middle mediastinum में कैसे आता है? अरे जब हम सांस लेते हैं ना तो नीचे चला जाता है T6 तक. ओके, T4 में it is in the cadavers at the level of T4. हमारा आधा स्टडी उसमें होता है, बट जिंदा आदमी पे आप अगर लोगे तो it will go up to T6. There will be phrenic nerve. Now there will be some structures. There will be some structures which will be passing from the superior mediastinum. उनको अलग अलग कलर्स में निकाल रहा हूँ. तो ये ट्रकिया को मैं ऐसे निकालता हूँ. इसमें ये कलर में ट्रकिया, और ये ग्रीन कलर में what I am drawing is esophagus. So trachea and esophagus are two structures which are passing from superior mediastinum. Esophagus passing to posterior mediastinum, trachea passing to middle. और ये जो हमारा ascending aorta,
अनदर इम्पॉर्टंट लाईन. शेवटच्या बेंचवरचा मुलगा उभा राहा. थँक्यू. हात असावा. क्या नाम है तुम्हारा? काय नाम क्या है? रजान. रजान. रजान, understand ascending aorta ends at T4, arch of aorta starts at T4, arch of aorta ends at T4, descending thoracic aorta starts at T4. हाँ, परत सांग. ascending aorta यहाँ तक जाता है T4 तक, after that it becomes arch of aorta. That means Razan, arch of aorta starts at T4. वो arch of aorta is a content of superior mediastinum. Ends at T4. वो पीछे चला जाता है, ऐसे यहाँ से आएगा, पीछे जाएगा. Ends at T4, and at T4 it becomes descending thoracic aorta. That means arch of aorta starts at T4, ends at T4. Ascending aorta ends at, descending thoracic aorta starts at T4. arch of aorta starts at T4. arch of aorta ends at T4. क्या बात है. वो लेफ्ट ब्रोंकस के ऊपर से चला जाता है. हाँ, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस. ओके, इसके ऊपर से चला जाता है. फैजल, तुम्हारे पीछे उस दिन जो लड़का बैठा था वो किधर है? नहीं आया ना वो? क्या नाम था उसका? सफवान. सफवान. ठाकरे. ठाकरे कुठे आहे ना? ठाकरे वर्गात एक मुलगा आहे ना ठाकरे नावाचा. मी काय उद्धव ठाकरेचा विषय विचारत नाही. कुठे गेला? घरी. There are two nerves. One is phrenic nerve. One is phrenic nerve, and one is vagus nerve. Vagus and phrenic. Phrenic nerve. Phrenic nerve will be part of middle mediastinum. Phrenic nerve वो सुपीरियर मीडियास्टिनम से मिडल मीडियास्टिनम में जाएगी. हाँ, और वेगस, वेगस कहाँ जाएगी? पोस्टीरियर मीडियास्टिनम. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट थिंग्स विच आर देयर इन पोस्टीरियर मीडियास्टिनम. क्या है? Esophagus. Esophagus. Then Vagus nerve. esophagus, vagus, then descending thoracic aorta, then हो झालं, वेगच झालं. अजून आहे का? अझायगस. अझायगस राइट साइड पे. और एक चीज है थोरैसिक डक्ट. अझायगस के साथ उसके सिस्टर्स हेमियाजाइगस, एक्सेसरी हेमियाजाइगस. डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा एंड ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस भी. हाँ, तो समझे दो नर्व्स आते हैं थोरैक्स में, एक फ्रेनिक एक वेगस. डॉक्टर बलशेटवर, फ्रेनिक passes from superior mediastinum to middle, while vagus passes from superior to posterior. ये आपने सर्वाइकल फेशिया जब पढ़ा था ना, प्री ट्रैकियल गोज लाइक दिस, प्री वर्टेब्रल गोज लाइक दिस, बराबर है? प्री, थैंक यू. प्री ट्रैकियल, प्री वर्टेब्रल, तो हम बोलते हैं कि पस इन फ्रंट ऑफ प्री ट्रैकियल passes from superior mediastinum to
anterior mediastinum. Pus between pretracheal and prevertebral pass from superior mediastinum to posterior mediastinum. Pus behind the prevertebral is restricted to superior mediastinum. It doesn't pass below superior mediastinum because prevertebral fascia gets attached to T4 vertebra. So pus behind the prevertebral fascia does not pass, is restricted to superior mediastinum, doesn't pass to posterior mediastinum. You are with me till now? Okay? Now let us talk about structures which are there in superior mediastinum. पृथ्वीराजच्या मागे बसलेला काय नाव तुझं? ओंकार. बोला ओंकार. सुपिरियर mediastinum मध्ये काय स्ट्रक्चर्स आहेत? आर्च ऑफ एओर्टा. अजून ट्रॅकिया. अजून इसोफेगस. आर्च ऑफ एओर्टा and its branches. ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन. क्या बोला मैं अभी दादा? हाँ, these are branches of artery. और phrenic nerve, vagus nerve. Phrenic nerve. Then vagus. There may be thymus also. Thymus extending from the neck. Extending from the neck. Thymus. Okay, superior mediastinum में हो सकता है. Neck से extend होगी. Anything else? Huh? Yes, SVC, superior vena. Superior vena. So brachiocephalic trunks, ओंकार बस खाली. Brachiocephalic trunks are formed. They unite with are formed behind the sternoclavicular joints. The subclavian veins, they unite with internal jugular veins behind the sternoclavicular joint to form brachiocephalic veins. Two brachiocephalic veins unite behind the right costal cartilage, first costal cartilage, to form SVC. So brachiocephalics are formed behind the sternoclavicular. Okay, so SVC is here. So this is how things become easy when you understand the mediastinum. Okay, अभी एक ही बच गया. कौन सा बचा है? हाँ, एंटीरियर में कुछ नहीं होता है. स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स. स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स ये उसका मेन कंटेंट है. उसके अलावा सब लिम्फ नोड्स में भी देयर. दैट्स ऑल. स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स. स्टर्नम से पेरिकार्डियम जाता है. मिडल मीडियास्टिनम में पेरिकार्डियम भी लिखो. हार्ट एंड पेरिकार्डियम. हार्ट एंड पेरिकार्डियम. फिर चिंटू मिंटू स्ट्रक्चर्स आएगा ऐसे. कार्डियक प्लेक्सिस. ये मेन थिंग्स है जो आपको आने चाहिए. ओके,
सचिन सर, नित्या मॅडमला फोन करा आणि ख्रिश्चन लोक संडेला कसं कन्फेशन करतात ना पादरी जवळ, वैसा कन्फेशन करो कि मैंने 8:15 की जगह पे 8:30 को ख़त्म किया है, तो कन्फेस करो। फिर इसके लिए हाँ ऐसा जो करने का करो, इसके लिए 15 मिनट आपका लेट चालू हो, बराबर है कि नहीं? स्टार्ट। अरे ऐसे कैसे स्टार्ट? 1 2 3 1 स्टार्ट क्या स्टार्ट? तू भी स्टार्ट बोल रहा है, मैं भी स्टार्ट बोल रहा हूँ। 1 2 3 स्टार्ट. So the space between the two lungs is called as mediastinum. So this is a sagittal section going through the midline. Here what we have drawn is heart. There is an imaginary plane passing from T4 to angle of Louis, the manubriosternal angle that divides the mediastinum to superior and inferior. Inferior is further divided into anterior, which is anterior to pericardium, posterior, which is posterior to pericardium, and pericardium and contents are forming the middle mediastinum. It's very easy to remember structures in all the mediastinum. If you know what is happening in superior mediastinum, the trachea is going, the esophagus is going down, the phrenic nerve and vagus, and the SVC. These are the 5 structures. Only thing their destinations are different. SVC goes from superior to middle. Phrenic nerve goes from superior to middle. Trachea goes from superior to middle. It is counted in middle. Esophagus goes from superior to posterior. Content of the middle mediastinum is pericardium and heart, along with the vessels. Vessels are pulmonary trunk and the 2 pulmonary arteries. Ascending aorta is the content of middle mediastinum. It becomes ends at T4. Arch of aorta starts at T4, ends at T4. Descending thoracic aorta starts at T4. So contents of the middle mediastinum will be, क्या लिखा है मैंने? Phrenic nerve. Then the trachea and the 2 principal bronchi. Then ascending aorta, pulmonary trunk and 2 pulmonary arteries, heart and pericardium and SVC. The contents of the posterior mediastinum will be esophagus, the vagus, descending thoracic aorta and its branches, azygos, hemiazygos, accessory hemiazygos, thoracic duct. Content of the anterior mediastinum are most easy: sternopericardial ligaments and few lymphatics. Contents of the superior mediastinum will be arch of aorta and its branches, trachea, esophagus, phrenic nerve, vagus, thymus, the lowermost part may extend, and superior vena cava. That's all about the contents of all the mediastinum. The applied anatomy, you should remember, the pretracheal fascia ends like this around the vessels. The prevertebral fascia ends at T4. So the pus between anterior to pretracheal will go from superior mediastinum to anterior mediastinum. Between pretracheal and prevertebral will go from superior mediastinum to posterior mediastinum, and pus behind the prevertebral fascia doesn't go to posterior mediastinum because prevertebral fascia gets attached to T4. Thank you. Okay? 2. हे मला कपडा फडका हवाय बरं का. तुम्ही सांगा ना, मामाला सांगा, रईसला सांगा. राहुल, तुमको कुछ खाने का है? देख. बट अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाला. 5 मिनिट अगर रुक सकते हो तो लवकर ये पूस. नाव काय तुझं? नाव काय? नाव जयंत. क्या बोले? नो. तूने कन्फेशन किया? तुमने कभी कन्फेशन किया क्या? हर संडे को जाके बोलती वो क्या है, मैं ध्यान नहीं दिया भोसले सर के क्लास में. मैं तुम्हारे वस्से के चर्च में अंदर जाके बैठेगा, और अगर तू जाके संडे को बोलेगी ना वो मैं फ्राइडे सैटरडे को बंक मारा,
क्या है आ रहा हूँ सोच के, तो मैं ना ऐसा हाथ से गले पकड़ सादा ओके, चुपचाप आने का। और रोशन नोट कर रहा है, और बाय द टाइम इसने TNMC बाकी स्टूडेंट्स को भेज दिया रहेगा कि सर ने ऐसा बोला। जिसको कौन कौन है पार्टिसिपेंट्स बिंदास, तो आपको सबको सबको मैं अटेंडेंस देंगे आज ही नहीं, उस दिन चालू है आज ही बोले तो चालू है। आज ही ते काय कोण बघत नाही रे उसमें। लास्ट टाइम मैंने इंटरकोस्टल स्पेस पढ़ाया, कल ऐसे ही मैं मेरे चैनल पे गया तो उस पर 1 व्यू था, वो शायद मेरा ही था। मैं उसमें पार्ट 2 पे 2 व्यूज था। मैं बोला और कौन हो सकता है जिसने देखा है, तब से मैं बोल रहा हूँ। ये तो क्या वो कन्फेशन कर रहे, सॉरी इंस्टाग्राम पे वो छोटा ही आता है ना, लंबा वीडियो। There are 2 sections in the thorax. We are talking about the mediastinum. There are 2 sections. So now what I am drawing is this is a transverse section. Okay? Your manubrium, your ribs. Manubrium नहीं, sternum है वो। T5. This is pleura. And inside the pleura is lung. Inside the pleura is lung. This is trachea. This is trachea. This is trachea. Okay? ओमकार ड्रॉ करो। हाँ, मैं इधर क्या MF हुसैन की तरह तुम लोग को चित्रकला नहीं सिखा रहा हूँ कि तुम लोग देखो वाह क्या ड्रॉ किया, बहुत पैसे मत फेंको उधर। हाँ काय प्रिन्सिपल ब्रॉन्काय, हे प्रिन्सिपल ब्रॉन्काय, दिस इज राइट प्रिन्सिपल ब्रॉन्काय and this is left principal bronchi. Okay? This is pulmonary trunk, this is pulmonary artery. Pulmonary trunk and pulmonary artery. Dividing and going to the lungs. SVC, superior vena cava. राइट साइड से वो अभी हार्ट की तरफ जा रहा है, वो टर्मिनल पार्ट है उसका। एसेंडिंग एओर्टा राइट साइड पे होता है। 1 मिनट चित्रकला रोको। एसेंडिंग एओर्टा यहां से जंप करेगा लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के ऊपर से यहाँ पे आएगा। सो दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो ऐसे जंप करेगा यहाँ से यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अजाइगस वेन,
thoracic duct. At C5 level, it starts moving from right to left. Right to left. Okay? Thoracic duct ऊपर आती है बॉडी में, राइट साइड में. T5 लेवल पे वो लेफ्ट पे जाती है. एंड देन नेक में जाती है. इट इज अ वन थिंग विच स्टार्ट्स इन एब्डोमेन, देन एंटर्स thorax, देन एंटर्स नेक ऑल्सो. ओके, सो ये पीछे तीन चीजें दिखाने हैं हमको. Behind the two principal bronchi, here is left vagus, right vagus, and here is right phrenic, and here is left phrenic. Okay, right phrenic and left phrenic. This is the easiest diagram which you can draw. Okay, एक चीज जो रह गई ड्रॉ करने की, बिकॉज मैंने सोचा था मैं दूसरे कलर में ड्रॉ करूंगा. Esophagus. Esophagus. Clear? बोला काय डाऊट? मृणाल कशी काय गेली रे? मृणाली कशी काय गेली? हुशार मुलगी होई. डिप्रेशन में गया मैं थोड़ा. हो, ती जरा जास्त मोठी झाली. thoracic duct. Okay, so here these are the contents of posterior mediastinum. Esophagus is the most anterior, descending thoracic aorta, thoracic duct, azygous vein, and the vagi. Grossly, these are the contents of middle mediastinum. Trachea dividing, pulmonary trunk dividing into two pulmonary arteries, ascending aorta and SVC. So these are the contents of posterior mediastinum and these are the contents of middle mediastinum. There are two sections which are there in thorax. One is at the level of T5, another is at the level of T4. Okay? You can do the arrangements. No, मेरा हो गया है. मुझे और एक सेक्शन दिखाना था, बट वो मैं नेक्स्ट टाइम एक ही टाइम पे दो सेक्शन सिखाए, बच्चे लोग को याद नहीं रहता. और वो लोग बता रहे कि हमारा हो गया, टंकी फुल हो गए, और पेट्रोल भरोगे तो बाहर आ जाए. One, two, three, start. So now I am drawing for you the section at the level of T5. This is the sternum, the ribs. Okay, this is T5. Inside here is lung and pleura, lung and pleura. Here is the trachea, trachea dividing into two principal bronchi. So this is what is seen at T5. The ascending aorta is seen here, descending aorta is seen here. So what is seen behind are the contents of posterior mediastinum. We see here the pulmonary trunk
dividing into pulmonary arteries. So what is seen here are the contents of middle mediastinum. There is also SVC. SVC. There is phrenic nerve. The right phrenic is here, the left phrenic is here. Okay? So these all, SVC, ascending aorta, pulmonary trunk, pulmonary arteries, right phrenic, left phrenic. These are the contents of middle mediastinum along with the pericardium and the heart. Now here are the contents of posterior mediastinum. Also the trachea and the two bronchi are also middle mediastinum. The most anterior structure in the posterior mediastinum is esophagus. So we draw it. Next is descending aorta, descending thoracic aorta. Next is the thoracic duct. And next is the azygous vein and two more structures, the right and the left vagus. So these are the two vagi. So two vagi, descending aorta, thoracic duct, esophagus, azygous vein. These are the main contents of the posterior mediastinum. So at T4, T5 level we see contents of the posterior mediastinum and contents of the middle mediastinum. Thank you. Thank you.